Hello everyone, so welcome back to my session on control system. This is going to be a state space analysis part 4 where I'm going to convert state model to transfer function. You can say that how to determine transfer function from the state model, right? So we have done already a lot of conversion. So, suppose a differential equation is given, so how to get the state model? Transfer function is given, how to get the state model, right? Okay, and if signal flow graph is given, how to get the state model, right? So all these things we have done. Now it's time where I'm going to talk about uh, how to get the transfer function, right? If the state model is given, right? So that last time I gave you one formula as well. Okay, that formula you have to be stick on, right? And then I'll talk about solution of the differential equation, right? So I hope my voice is audible to all, right? And everything is fine, right? Okay, so this is triple S. Okay, you can say this is going to be state space analysis part 4. Okay, so you can see here these are the state models. X differential vector operator X is equal to ax plus bu. Okay, ax plus bu, right? It is nothing but what? It is nothing but the linear combination of, you can say, a and b, and here x and you have multiplied, right? And this is also, so this is for t greater than 0, and these are the initial condition I'm talking about. What is x? X is a state vector that everybody knows. X dot is derivative of state vector with respect to time. Okay, y is output vector, u is input or control vector, we call it, right? A is a system matrix. Okay, a is nothing but a system matrix, right? So please remember, a is nothing but what? A is nothing but a system matrix. System matrix. And your B is nothing but input matrix, C is nothing but output, and D is the feed forward matrix. Okay, so this was the idea. Now I'll take I'll talk about how to get transfer function from the state model, right? So last time I gave you one expression as well, right? So in case of state model, A, B, C, D will be known, right? A matrix will be given, B matrix will be given, and you have to find the state model, right? Okay. So transfer function, okay, from transfer function from the state model, from the state model. Okay, transfer function from the state model. It is very important concept, right? You have to remember. So control system is almost for 8 to 10 marks, right? And you can easily score if you will follow my lectures properly, right? Whatever lectures I'm going to offer. So transfer function for a state model, right? So transfer function is basically, suppose any state model is given. Okay, the similar state model that I have discussed this. Okay, so you have to understand C times Si minus A. Okay, Si minus A inverse times B plus D. Okay, so this is what the transfer function is going to be, right? Okay, you can also mention this transfer function as, you can also write this transfer function as C times, A inverse is what? A inverse is nothing but, suppose any matrix A inverse you have to find. So adjoint of A, one mod of A, right? So that is that. So here also you can write, adjoint of Si minus A upon mod of Si minus A, matlab that you have to find, then times B plus D. So let me take one question here, right? So please remember this, okay? Please remember this. And if you take this, if you take the determinant of Si minus A, okay, this determinant of Si minus A, you have to make sure that Si minus A, okay, this Si minus A, the determinant of, suppose you are doing like this, the determinant of Si minus A, right? If you make it 0, right, determinant of Si minus A is equal to 0, you will get what? You will get one characteristic equation. Characteristics equation, right? And from the characteristic equation, you can get roots. And these roots will be the eigenvalues, okay, of the matrix that you can say, right? Eigenvalue of the matrix, okay? Eigenvalue of the matrix.
just like we used to do like a minus lambda I, a minus lambda I. Okay, so the roots of the characteristic equations are called pole. Okay, the roots of the characteristic equation are called poles, and these poles are also known as eigenvalue. Eigenvalue, right? So please remember your linear algebra courses, whatever I have taught, right? So if you have followed my linear algebra course, so you will not face any problem in state space analysis, right? ठीक है, तो ये information याद रखना. Now what we can do here is, suppose we have got a question here. Let me take one problem directly to understand this concept. Okay, so problem here is find the transfer function of to the given state model, right? What you have to do, find TF to given, find TF to given state model. Find TF to given state model. Okay, x1 dot x2 dot. Okay, x1 dot x2 dot, right? What you can do, the differential state vectors x1 dot, this should be linearly independent. Okay, this should be linearly independent, always remember. So x1 dot x2 dot is equal to, the matrix is given, that is minus 2, minus 3, okay, 4 and 2, and this is x1 and x2, right? Plus V matrix is also given, that is 3, 5 and U. Okay, this is a state model, is okay, it is given, and bi is given as 1, 1, and here x1 and x2. Now what you can do here is, you can directly find out, you have to recall, right, what is transfer function. Transfer function is nothing but the TF is nothing but what, C times Si minus A whole inverse times B plus D, right? Since D is not given, right, D is 0 here, right? So A, B, C, everything is given. So first of all, what you can find out is, you can find out the Si minus A inverse, right? Si minus A inverse, right? So what you can do here is, first of all, you can add S diagonally and change the sign of the coefficient, right? Okay, so आप क्या करोगे सबसे पहले, you have to find Si minus A first, right? What is Si minus A? Si minus A, S means S0, 0S and minus A. So here A matrix you write, 2 by 2 matrix is given, right? So you can say that minus 2 minus 3, minus 2 minus 3, right? And then 4 and 2, 4 and 2, right? Now you can add this. So if you add this, so it will be S plus 2. Okay, it is nothing but S plus 2, right? And then it is going to be 3, and this is minus 4, and then it will be plus 2, minus 2, right? Okay, so you will get Si minus A like this. Okay, this is Si minus A. Now what you have to do, how to find Si minus A inverse? This is Si minus A that you have got. You have to make sure that you have to subtract from S times identity matrix minus A, right? So this will be the this will be the matrix that you will obtain. Now how to determine, you should know the shortcut here. Shortcut of finding, suppose you have got A matrix which is A, B, C, D, right? And if you want to find A inverse of this matrix, what you can do, you can find the determinant of this. So it is nothing but AD minus BC, and then what you have to do here is, you can interchange D and A, right? So you write D here, A here, and change the sign of this, right? Minus B and minus C. So this is the determinant that you can get directly. Okay, this is the determinant that you can get, okay, directly. So here Si minus A whole inverse कैसे हम find करेंगे? For 2 by 2 matrix, this is the shortcut that you can use, right? So what is the determinant in this case? The determinant is going to be 1 upon S plus 2 whole square, and this is going to be plus 12. This is the determinant. Now you can interchange. So sorry, it is not like that, because this is S plus 2, S minus 2, right? So it will be S square minus 4 that you can written.
Okay, that you can write, and then you interchange s minus 2 here, s plus 2, right, diagonal elements, and you put here minus 3, and this is 4. So this is the A inverse that you have got, right? This is the A inverse that you have got, right? And you have to remember this. You can further write this as 1 upon s square plus 8, s square plus 8 times s minus 2 minus 3 4 s plus 2. Now what you can do, you can plug this into the formula that transfer function is going to be equal to c times si minus a inverse times b, okay, plus d. D is not present, so you don't have to worry about that. D is not present, right? Upon nothing is there, okay, you don't have to put anything. So now d is 0, so you can forget about that d, okay. D is not given, so d is 0. Now you can plug. So what is c? C is nothing but double 1, right? So 1 1, and si minus a. Si minus a is going to be s plus 2 minus 3 plus 4 s minus 2, right, upon s square plus 8, right, and then you multiply b. What is that b? B is nothing but a column matrix, column vector, that is 3 and 5. So what you can do, first of all, you can multiply this and this, right? Okay, you can multiply here, okay, or if you want to multiply this and this also, you can do, right? C times si minus a inverse first you can do, right? So let me do. So it is nothing but 1 into 2, and this is 2 by 2. So 1 into 2 only you will get, right? Okay, so that you have to keep in mind. I hope this makes sense. So you will get here s plus 2 and s minus 2. Okay, s plus 2 and s minus 2. What you can do, you just multiply like this, okay. So I think this is correct. I think here it should be s minus, let me check si minus a inverse, what is that? It should be here. I think I have done, you can correct it, right? It should be s minus 2 and this is s plus 2. Okay, so it is s plus 2, it is s minus 1. Okay, so please make sure don't make mistake in calculation, right? Okay, if you multiply, so it is nothing but s minus 2 plus 4, that is s plus 2, and here if you multiply, so minus 3 and this is s plus 2, right? So you will get s minus 1, right? And you multiply 3 and 5 by s square plus 8. Again you will get this is nothing but 1 by 2 and this is nothing but 2 by 1. 1 by 1 matrix you will get, right? 1 by 1 means simply if you multiply this and this, okay, so it will be 3s plus 6 and plus 5s minus 5 upon s square plus 8. Okay, so you will get here 8s. If you further solve this, so you will get 8s, okay, plus 1 upon s square plus 8. So this is the transfer function that you will get. This is the transfer function that you are going to get, okay. Okay, this is the transfer function that you are going to. So don't make mistake, guys, while multiplying two matrices, right? That the basic requirement is what? How to multiply two matrices, that's it, right? Now from here you can find the poles, right? From here you can find the poles and you can conclude various things also, right? So since you have got the transfer function, that is as 8s plus 1 upon s square plus 8, that is the transfer function that you have got, cf by rs, right? So if you try to write this as s square plus 8 equal to 0, this is the characteristic equation, right, that you can do. So s square is going to be equal to minus 8, so s will be equal to what? Plus minus j 2 root 2. Plus minus j 2 root 2 you will get, right? Plus minus j 2 root 2. Okay. Now you can conclude that what kind of system is, whether system is stable, unstable, or marginally stable. So here the nature of the roots is purely imaginary. Okay, they are purely imaginary.
and they will be sitting on S plane on the imaginary axis only, like this. So plus j root 2, and this is minus j root 2. So you can clearly say that the system is marginally stable. Marginally stable system. Okay, marginally stable system, and from here you can also find the omega and natural frequency, that is 2 root 2, right? Radian per second. Okay, radian per second, that you can find out. Okay, so marginally stable system means what? You can say undamped system. Marginally stable means undamped system. Okay, so these are the answers that you can do, right? Always. Okay, these are the questions that you can answer, okay, from the transfer function, if you get the transfer function, right? So that is very simple. Okay, but what I will suggest here is, suppose in the question state model is given and they are asking about whether it is marginally stable or undamped system or underdamped or whatever. What you do always is just find out what the determinant of s minus a, okay, and find out the roots of that. Okay, so depending on the roots you can answer it. Okay, fine. So please try. Okay, there are a few more questions. Okay, now we will talk about, you can try more questions, right? I'm not gonna do again. Okay, for one concept, one question is enough, right? You guys can try this question also. I can give you the question. Okay, next question, I'm just giving you as an exercise, you can say. So suppose you have got state model x1, okay, which is nothing but 0, 3, -2, -5, right? And here x1, x2, okay, plus the B matrix is given as 1, 1, right? U, okay, 1, 1 and U, right? And then Y is given as what? Y is given as 2, 1, and this is nothing but you can say x1 and x2. Okay, so x1 dot x2 dot is given, and 0, 3, -2, -5, right? X1 and x2. Now you see, this is A matrix, this is D matrix, this is C matrix. So you can use, first of all, what is the first step that you have to do? Find Si minus A, right? Then second, find Si minus A inverse. Third, use the formula, right? That is C times Si minus A whole inverse times B, right? And you can conclude whether system is stable or overdamped or undamped, whatever, right? Okay, depending upon the pole, right? Pole location, where pole is located, right? Here the, if poles are on the imaginary axis, purely imaginary poles are, right? So certainly they are going to be undamped, right? Okay, if the poles are coming out to be purely real, you can say poles and zeros, right? If they are coming out to be purely real, poles are real, right? So what you can do, what you can say then, the system is gonna be overdamped system, right? Okay, so that is what the main thing is. And now let's talk about solution. Okay, so these things like what is underdamped, what is undamped, what is overdamped, how do we decide the system is stable and unstable? You know, we will talk in time domain analysis, right? Okay, understand? So you should be able to talk about the properties of the system. Okay, whether you are dealing with, you are talking about state model or root locus, or you are in frequency domain, right? Like Nyquist plot you are talking about. So everything you should be able to investigate, right? Okay. Now we'll talk about solution to state equation, right? It is important topic. Okay, solution to state equations, whatever state equations that you have got, what is going to be the solution of them, right? So you know that you have to remember. So let me recall the state equation, and this state equation is nothing but non-homogeneous state equation, right? Non-homogeneous, okay, state equation. Why non-homogeneous? That you should understand, right? Okay, non-homogeneous state equation, you can say that x dot is going to be ax plus bu, right?
This is the non-homogeneous state equation, right? So I'm going to discuss various methods here. The first method that I will talk about is the Laplace transform method, right? We call it LTA, LTM, Laplace transform method. Let me write full Laplace transform method. So in case of Laplace transform method, what I'm going to do here is I will take the Laplace transform of this entire, you can say, okay, and considering the initial conditions and all, right? Initial condition also you can consider, right? So if you take the Laplace transform of any differential operator which is operating on certain state vector, right? So it will be written as s times x of s minus x times 0, right? Okay, from the definition you should know this, right? Which is equal to, what is the Laplace transform of any derivative? This is the Laplace. If initial condition, some initial value is given, right? Some boundary values are given, right? Okay, initial value, you can say initial value problems. So x times xs minus x naught, and इसको लिख सकते हो x times s, right? A times xs, right? Plus b times u of s. Okay. So I'm applying the Laplace transform property. I'm taking the Laplace transform both sides again. Now xs and xs you can take one side, right? So next step is going to be what? This is the first step that you have to do. The second step that you have to do is s times xs, and इसको आप इधर ले लो. This will be minus a times x of s, right? Okay, minus a times x of s. Okay, I hope this makes sense. And you take this x naught this side, right? So x naught plus b times us. Okay, that is the input. B times us. Fine. Now you can take common here, something common. Okay, something coming out to be common, right? So you can take xs common, right? You can take xs common here. So xs is going to be equal to, sorry, I should take this equation in the next slide so that okay, दूसरे slide में लेते हैं. Fine. So what you can do here is you can take xs common. So xs common आ गया तो ये आ जाएगा si minus a, ठीक है? Because you can't subtract directly, any constant with matrix. You need to take the same size. Okay, so you have to multiply s times identity matrix, fine? S times identity matrix, now which is equal to, I hope this makes sense to all, right? Which is going to be equal to x naught plus b times us. Okay, understand? Now you can find out this x of s. What is this x of s? If you multiply, can say like this, you can multiply here, okay? Or you can take this guy this side also. So this will be nothing but si minus a times x naught, right? X naught, okay, inverse, right? Plus b times, okay, b times, or si minus a inverse, whatever you write here, si minus a inverse b times u of s, right? Now if you want to get back the time domain equation, right, you have to get the time domain equations. What you will do here, you will take the inverse for Laplace transform, right? So take the inverse Laplace transform so that you can get it. So taking ILT, inverse Laplace transform, right? So it will be x of t, right? X of t is going to be equal to inverse Laplace transform of si minus a whole inverse x naught plus L inverse of si minus a whole inverse b times u of s. Okay. Now you should know this, what we call this and what we call this. Okay, they have two different names that you have to remember. Okay, so this is finally this is the kind of response that you can say, right? X of t is what? X of t is L inverse si minus a. Okay, so you can say this is nothing but a zero input response. Okay, you can get this response because there is no input here, right? You see, there is no input. There is only there is only what? Initial conditions, right? Okay,
Because of this initial condition, if initial condition is given, x naught is given, right? So you can find the this response. So we call this response as zero input response, right? Zero input response. Okay. Why we call it zero input response? Because we will be getting response, zero input response, due to given ICs, right? Due to initial condition. Okay. So whenever you get the response because of initial condition, we call it ZIR or zero input response. Okay. ZIR. And इसको क्या बोलेंगे? This is nothing but a zero state response. Zero state response. Because there is no, there is nothing, there is no, you know, initial condition, but there is an input. Okay, due to input. Due to input. So keep in mind whenever they are, suppose in the exam they are asking find out the zero step input response, ZIR. So you have to always calculate response because of state. Okay, so they will be giving you some state value, I mean some initial state, right? Whenever you have to find ZSR, right, that is zero state response due to input, right? Okay, so let me mention all these things, please remember. So ZIR, okay, is computed due to initial condition. And ZSR when computed due to, okay, zero state, you know, we call it zero state response, right? So due to input here, right? Due to input. Okay. So ZSR and ZIR, please remember these two important terms. Okay, how can you find ZIR? With the help of zero input, with the help of initial condition, ZIR. देखो जो जीरो है, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, मतलब इनपुट इज नॉट गोइंग टू प्ले एनी काइंड ऑफ रोल, ओके, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन ZIR. ये याद रखना. ZSR means due to input, okay, because of input. Okay, here the state, like initial state, initial conditions on state is not going to play any role, right? So zero state response is due to input, right? So this is the first method that you can always go for, right? So this is the first method, okay, and which is the Laplace domain method, and we are comfortable with this method. Okay, we are comfortable with this method. But the second method we call it classical method. हम लोग क्या करेंगे, method 2 भी देखते हैं. We call it classical method, right? Classical method, okay, classical method. So the second method is classical method. Okay, so I'm not going to give you the proof and all here, directly I will tell you. Okay, you see, so x of t is going to be written as, okay, e raised to power at times x of 0 plus, okay, 0 to t, integration 0 to t, okay, e raised to power a times t minus tau, okay, t minus tau, b times u tau, okay, u tau, d tau, right? So this is the expression that you have to remember, right? Classical method. We are not applying any kind of, you can say we are not applying any sort of Laplace transform here, right? So always keep in mind, guys, if you compare this guy, okay, if you compare this guy with this, okay, with this, understood? So you can compare this. So here you can say that, please remember, this is nothing but the first term in this expression is going to be ZIR, zero input response. Okay, this is nothing but zero input response. Okay, and this e raised to power at plays an important role, guys. Okay, we'll see what is this e raised to power at, what is that, huh? And this is nothing but what? This is nothing but your e raised to power at only, but shifted by minus
tau, right? So this is nothing but you can say phi t minus tau, right? Some new function phi t minus tau you can say. And B, this is a B matrix, okay? And this entire is nothing but ZSR in time domain. ZSR in time domain, right? If you compare ZIR term, okay? Compare ZIR term, right? Okay, if you compare ZIR terms, so what you will find out here is this phi t is going to be what? Phi t is nothing but e raised power at, okay? And which is equal to L inverse of Si minus A inverse, okay? You can compare here from this. If you take the Laplace transform, if you compare here, so this is nothing but your, I hope this makes sense to you, right? So phi t is nothing but L inverse Si minus A. This is phi t times x0, and here phi t tau t minus tau times b u tau, right? Okay, so this is how we find the state transition matrix. Please remember. From the system matrix, how do we determine the state transition matrix? This is the story. So ZIR to compare, so phi t you can find out, okay? This is nothing but state transition matrix. याद रखना बहुत important. This guy is nothing but, or else let me write again. Why to, no, let me choose some different color. You can choose green here. This phi t, or you can say e raised power at, or you can say L inverse Si minus A inverse, right? Si minus A inverse, okay? So this guy is nothing but state transition matrix. Please remember guys. So क्या बोलते हैं? STM, or we call it state transition matrix. So what is the difference between system matrix and the state transition? See, A is what? A is nothing but system matrix. System matrix. And e raised power at is nothing but state transition matrix. Okay, please remember, okay? And note down separately, okay? Because many people get confused. They have confusion with A and e raised power A. A is system matrix. What you obtain directly from the differential equation, from transfer function, you know, from state model, okay? Sorry, signal flow graph, right? But once you get the A matrix, from A matrix you can get state transition matrix. If A matrix is not known, you cannot get state transition matrix. Okay? These things you have to remember, fine? These are very important things that you have to keep in mind. Okay, fine. So this is important, guys. Now what you have to remember here is, suppose you have got phi t is going to be L inverse of Si minus A whole inverse. Okay, this is the inverse Laplace transform. This is inverse Laplace transform. So if you take the Laplace transform of phi t, which is nothing but you know, phi s, so it will be basically Si minus A inverse. Si minus A inverse is nothing but phi s. Okay, please remember this. These are the important properties that you should know, right? So if you have got Si minus A inverse, right, so you can directly find out, you know, you can find the phi t, which is the state transition matrix, right? So if you get Si minus A inverse, okay, and take the inverse Laplace transform, okay, find Si minus A inverse and take inverse Laplace transform, right, which will give you state transition matrix, okay, which is nothing but e raised power at or phi t. So these many steps are needed, right? It's a very simple process, right? स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऑब्टेन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? Si minus A inverse, take IRT, and then that is gonna be the state transition matrix. I hope this makes sense. Okay,
Now let us take and compare the ZSR, right? Let me compare the ZSR as well, right? Now comparing ZSR. Now comparing ZSR, right? ZSR term. Now comparing ZSR term, right? ZSR term, please remember, okay? So if you recall what is ZSR term, so 0 to t, okay? Phi t minus tau b u tau d tau, okay? You are comparing this with the L inverse, okay? L inverse phi s, okay? Phi s times b times u of s from the Laplace transform, basically, right? You are comparing that, the Laplace transform, understood? So from here you can say that xt is going to be equal to e raised to power at x of 0 plus L inverse of phi s times the matrix B, right, times u of s. Sometimes this is also very important, right? This is also very important to remember. Guys, don't take this xt as input, okay? It is not input, okay? Xt is not input. U of s is the input, right? Xt is the state variable that you have to remember, okay? One of the state variable. So xt is equal to state transition matrix plus state transition matrix times the initial value, right? That is x of 0, initial state you can say, plus L inverse phi s. And what is this phi s, guys? Remember, what is this phi s? Phi s is nothing but L inverse times si minus a whole inverse. The Laplace transform of this, right? Laplace transform of this, okay? I mean, you take the inverse of this, okay, e raised to power at, that will give you phi s, okay? That will give you phi s, not inverse, sorry. 1 minute, sorry, I should write it should be phi s equal to this only, right? Phi s equal to si minus a inverse, okay? Si minus a inverse is phi s, okay? So what is the difference between e raised to power at? E raised to power at क्या है? E raised to power at is inverse, Laplace inverse of si minus a inverse, right? And what is this phi s? Phi s is nothing but si minus a inverse, right? Simple. ठीक है? So in case of state transition matrix, you have to find inverse of si minus a, then take the inverse Laplace transform, because you have to get in time domain in phi t. But since it is in Laplace domain, so you don't have to do anything. Just find out si minus a inverse. That is just a Laplace transform of you can say state transition matrix phi s. Okay, so that I think directly you can obtain this, right? In order to get phi s, okay, you don't have to again but e raised to power at you can find out by taking the Laplace inverse of that. Okay. So I think this is clear. Okay, so you have to remember these expressions. Xt is going to be e raised to power at x of 0 plus L inverse phi s times b times u of s. Now let us talk about some of the important properties of STM, right? The state transition matrix. You should know the important property of state transition matrix. Okay. What are the important property of state transition matrix that I am going to list down? Important properties of STM. Important properties of STM, right? Important properties of STM. State transition matrix. State transition matrix. Okay. State transition matrix. Okay. Properties of STM, state transition matrix. Now, what is STM first of all?
the state transition matrix is nothing but phi t, which is equal to e raised to power at. Please remember this basic thing that you should do. Phi t equal to e raised to power at, right? So if you try to find what is phi 0, number one, since you know that phi t is going to be e raised to power at, so suppose I'm finding what is, we are taking the exponential of the a times t, right? A times t matrix times this t. Okay, so if you try to find phi of 0, right, phi of 0 is nothing but what? E raised to power 0, which is I, you can say identity matrix, right? Because this is a, this is nothing but the state transition matrix. So if you put t equal to 0, so you will get identity matrix, right? It is not the value, basically it is a matrix, identity matrix. Okay, so please remember some of the important properties of so sometimes what happens, you can verify also. Suppose anywhere they are asking calculate the state transition matrix, so you can verify this. Okay, any state transition matrix will satisfy this property. Okay, if you put in place of t equal to 0, that should be always the identity matrix. So sometimes you can apply this test also. Second one is, if you take the suppose phi to the power k times t is there, right? What is the meaning of this? E raised to power at times e power k. It is nothing but simple. It is very simple. You can say e raised to power, kt, e raised to power a times kt. Right? Simply you are multiplying something with time. Okay, because your e raised to power a times kt. Okay, and what is this? You can say this is nothing but phi kt. Okay, you're just multiplying in the time, okay, in the argument by k. If you're taking power, that will be multiplied here. Okay, I hope this makes sense. Suppose you're finding phi square t, that is phi 2t, simple, because this, if you take the square of the exponential, so that square is gonna get multiplied, right, with the power. So example you can take here is one example. Suppose you are finding phi inverse of t, so this is equal to phi of minus t, simple. Okay, please remember this is very important fact that I'm telling you, तो आपको ये याद रखना है. Then next property is, suppose phi you are finding t1 plus t2. Okay? So it is nothing but you can prove it. Okay, you can prove it. So it is going to be phi t1 into phi t2. How? You can a times t1 plus t2, and if you break this, a t1 dot a t2, which is nothing but phi t1 and times phi t2. You can prove each and everything, right? There is no difficulty at all. And the fourth one is phi t2 minus t1, right, into phi t1 minus t0. Phi t2 minus t1, right? Phi t2 minus t1, phi t2 minus t1. Okay, phi t2 minus t1 times phi t1 minus t2 is going to be equal to, okay, is going to be equal to what? It will be phi t2 minus t0. Okay, t2 minus t0. t2 minus t0. Please remember this. Okay, so these are the important concepts that you have to keep in mind. So ये सारे properties हैं that you can prove it also, right? t2 minus t1 and all these things. Okay, so let us take one problem and apply all the concept and try to find the answer, right? तभी तो realize होगा ना, then only we can realize everything, right? So आपको याद रखना है as an algorithm कैसे कैसे करना है, right? Solution कैसे find करते हैं किसी भी equation का, okay? किसी भी equation का solution कैसे find करते हैं,
that you have to keep in mind. That is non-homogeneous equation, right? Input should be given there. Input is given. So we can take problems and we can try, okay, and then we will go for some other concept. आपके एग्जाम में क्या आएगा समझ जाओ, ठीक है। अगर xt की वैल्यू पूछ रहा है एट सर्टेन टाइम t, राइट, तो आपको समझना है कि ये क्या है। दिस इज जस्ट अ सॉल्यूशन टू स्टेट ट्रांजिशन, लाइक स्टेट मॉडल, राइट, स्टेट मॉडल। आपको इनपुट नहीं समझना, xt इज नॉट द इनपुट हियर, राइट, दे आर द स्टेट वेक्टर्स, ठीक है। ये बहुत सारे कंफ्यूजन आते थे, यू नो, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर गेट वे बैक, राइट, दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल। तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं आएगा, नहीं तो आपको you just find out these sessions anywhere, you will find that after each step there is a confusion, but here no confusion, because I know what I should speak, what I should tell you, okay, so that you can digest it, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं, that problem is very simple question, right, you can say one problem related to this, ठीक है। What is this problem, guys? The problem says that obtain the complete system response, okay, obtain the complete system response, okay, obtain the complete system response of the system of the complete system response of the given system below, right, system given below, okay, obtain the complete system response of the system given below, right। तो आपको एक सिस्टम दिया रहेगा, उसको सिस्टम रेस्पॉन्स फाइंड करना है, सिस्टम रेस्पॉन्स, राइट, यू हैव टू फाइंड सिस्टम रेस्पॉन्स, राइट, system response you have to find out, okay, and that too complete system response. If they are saying complete system response means what? The zero state response and zero input response, right, that is the complete system response, okay? Zero input response and zero, okay, so please remember this, obtain the complete system response। अब आपके यहाँ पर दिया क्या है, x dot is given as the matrix 0 1 minus 2 0 x1 and x2। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अप्लाई करो मेरे कॉन्सेप्ट को, बस आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, गेट में डैम श्योर है आने वाला है सेम, ठीक है। और आप कोई भी बुक उठा सकते हो, नीस, उगाटा, यू नो, बीसी कुओ, कोई भी बुक ले लो, एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो ऑब्टेन द कंप्लीट सिस्टम रिस्पॉन्स एंड रिमेंबर द लैंग्वेज आल्सो, कि ये सिस्टम रिस्पॉन्स किसको बोलते हैं, क्या फाइंड करना है। तो ऑब्टेन द कंप्लीट सिस्टम रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम गिवन बिलो, है ना, जिसमें कि आपको दिया हुआ है, ये दिया है, राइट, एंड they have also mentioned the initial state, that is x0 is also given, that is 1 1 1 1, right, and by is also given, by is given as 1 1 1 minus 1, ठीक है, x1 and x2, right, x1 and x2। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, you can notice something here, what you can notice here is कि इसमें b मैट्रिक्स प्रेजेंट ही नहीं है। बी मैट्रिक्स प्रेजेंट ना होने का क्या रीजन है? बी मैट्रिक्स प्रेजेंट नहीं है इन द सेंस व्हाट, इट इज अ होमोजेनियस इक्वेशन, राइट, इट इज अ होमोजेनियस इक्वेशन दैट यू कैन से, राइट, होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन दैट यू कैन सी। इफ u is present, so you have to consider u, that will be non homogeneous, okay। So if u is not present, right, let me write here, right, you start solving now। So first observation is what, x dot equal to a times x plus bu, but this guy is not present, right, so you can say that since u is 0, right, u is 0, okay, the input is 0, you can say, since u is 0, so what will happen, this is called homogeneous state equation, right, homogeneous state equation। And what is the form of homogeneous state equation? That is x dot equal to ax, x dot equal to ax is called the homogeneous state equation,
आपको पता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? जब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हेन ax इक्वल टू 0, हियर x डॉट डेरिवेटिव, थोड़ा सा मजा आएगा यहाँ पर, आपको समझना है। जो लीनियर अलजेब्रा पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा सा समझ आने वाला है। तो x डॉट इक्वल टू ax when u equal to 0, right, is going to be known as what? Where u is 0 is known as you know, homogeneous state equation, right? Homogeneous state equation. तो आपका इनपुट जीरो मतलब जीरो इनपुट response, right? You can find zero input response. Okay, what is given in this question is the state. Initial state is given, you see. With the help of this is initial state. If initial state is given, guys, if initial state is given, input is not given, तो जीरो स्टेट रेस्पॉन्स तो आप फाइंड ही नहीं करो। कंप्लीट रेस्पॉन्स क्या होगा आपका? केवल जीरो इनपुट रेस्पॉन्स होगा, ठीक है। जीरो स्टेट रेस्पॉन्स यू कैन नॉट फाइंड आउट बिकॉज इनपुट इज नॉट गिवन। जीरो स्टेट रेस्पॉन्स इज इवेलुएटेड और डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इनपुट। इनपुट यहाँ दिया नहीं है, तो आपको क्या इसमें निकालना है? केवल और केवल जीरो इनपुट रेस्पॉन्स। और जीरो इनपुट रेस्पॉन्स आपका क्या होता है? आपको आपका जो कंप्लीट रिस्पॉन्स होता है गाइस, याद रखना, कंप्लीट सिस्टम रिस्पॉन्स, कंप्लीट सिस्टम रिस्पॉन्स, ओके, is going to be equal to xt is going to be ZIR plus ZSR। ये किसके वजह से होता है? when u is 0, okay, and ये किसके वजह से होता है? when initial state is 0, right? इनिशियल स्टेट 0 होगा लेकिन इनपुट understood, input will be given here, okay, here input is 0। क्या दिया रहेगा? इनिशियल स्टेट इज गिवन। ये सब पॉइंट याद रखना गाइस, ठीक है। तो अब इसमें ZIR निकालना है, तो ZIR क्या होता है? xt इक्वल टू e raised for 80 times x 0 होता है, और यू कैन आल्सो राइट 5t times x 0, राइट। आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर ऑल, राइट, ठीक है। ये द गिवन स्टेट मॉडल इज होमोजीनियस, हेंस द सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी व्हाट? दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन। सो ऑब्जर्वेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। जब आप गेट क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें ऑब्जर्वेशन भी बहुत मैटर करता है। क्वेश्चन में दिया क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको अटैक करना है, आप क्विकली अटैक कर पाओगे, राइट। इसमें कुछ भी नहीं निकालना है, इसमें स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालना है बस। ई रेस्ट फॉर 80, ई रेस्ट फॉर 80 बोलो या कि पाईटी बोलो, क्या है ये? इट इज नथिंग बट एल इनवर्स, ओके, एल इनवर्स एस आई माइनस ए होल इनवर्स। मतलब आपको लैप्लास इनवर्स निकालना है, पहले एस आई माइनस ए इनवर्स निकालो। तो एस आई माइनस ए इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप एस आई माइनस ए निकाल लो। एस आई माइनस ए का मतलब एस माइनस जीरो, सॉरी, एस जीरो और जीरो एस माइनस ए। ए मैट्रिक्स यहाँ लिख सकते हो। ए मैट्रिक्स कितनी दी हुई है? 0 1 माइनस 2 0, राइट। तो याद रखना कितना दिया हुआ है? 0 1 माइनस 2 0। यहां से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? s माइनस 1 2 एंड यहाँ पर s आ गया, ठीक है, ओके ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है। अब जैसे एस आई माइनस 1 2 s आ गया, राइट। अब इससे इनवर्स निकालना है। 2/2 का मैट्रिक्स है, बहुत सिंपल होता है इनवर्स निकालना, एस आई माइनस ए इनवर्स। आप इसका डेट निकालो पहले, तो एस स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। अब क्या करो? डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करोगे तो कुछ नहीं चेंज होने वाला है, एस एस ही रहेगा। इसको 1 कर दो, इसको प्लस माइनस 2 कर दो, बस ये इनवर्स आ गया, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। अब आप क्या करोगे? इसको, इसका इनवर्स निकाल लो। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एस बाई एस स्क्वायर प्लस 2 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 बाई एस स्क्वायर प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा? एस बाई एस स्क्वायर प्लस 2। अब इसका इनवर्स निकालेंगे इस मैट्रिक्स का, तो
तो इसको कॉपी कर लेते हैं। इनवर्स निकालने का तरीका तो बहुत सिंपल है, राइट। इट्स अ वेरी सिंपल मैट्रिक्स, इसका इनवर्स निकालना है। अब लैप्लास इनवर्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लैप्लास इनवर्स, तो एल इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए का इनवर्स इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ दिस। तो इसका इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, इसमें कितना आएगा आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इसको ऐसा लिख दो, एस बाई एस स्क्वायर प्लस रूट टू होल स्क्वायर, ये इसका क्या आएगा कॉस रूट टू टी, राइट। तो आप बोल सकते हो इट इज नथिंग बट कॉस रूट टू टी, ये कितना है साइन रूट टू टी, ओके साइन 80, and this will give you minus 2 times, right, minus 2 times. I think this is clear for all. ये माइनस यहाँ पर कितना आएगा माइनस यू कैन से रूट टू साइन, राइट, माइनस रूट टू टी, ओके, एंड देन यू कैन से दिस इज कॉस रूट टू टी। यहाँ पर माइनस रूट क्यों आ रहा है आप समझ सकते हो, ठीक है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन दैट यू कैन डू, राइट। कैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ये समझ जाना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज नथिंग बट साइन 80, और s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज नथिंग बट कॉस 80। तो ये सारे चीजें हैं जो आपको याद होना चाहिए। मतलब उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है एल इनवर्स ऑफ दिस गाय, एल इनवर्स ऑफ दिस गाय। सो जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अच्छा है, मैट्रिक्स अच्छा है, तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो यार तुम्हारे पास ये आ गया फाइटी आ गया, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स आ गया, मेन जॉब आपका स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालने का था। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा दो इनिशियल स्टेट से, तो आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा, आपका एक्स टी आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स टी आ जाएगा क्या, एक्स टी इक्वल टू स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स आपका यहाँ पर दिया हुआ है कॉस रूट टी टी साइन रूट टू टी माइनस रूट साइन रूट टू टी, एंड यहाँ पर भी कॉस रूट टू टी टाइम्स 1 राइट। इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या होगा, ये दिस इज 2/1, 2/2 मैट्रिक्स है, ये 2/1 मैट्रिक्स है, तो 2/1 का मैट्रिक्स आ जाएगा, सिंगल सा 2/1 का मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। ओके ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो तो अभी क्या है कि आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पर याद रखना, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन दिया था ऑब्टेन द कंप्लीट सिस्टम रिस्पॉन्स, ठीक है, तो ये कंप्लीट सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है, याद रखना ये कंप्लीट सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं है, ये तो आपका स्टेट रिस्पॉन्स है, याद रखना दिस इज द स्टेट रिस्पॉन्स दैट यू आर गेटिंग, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स और जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, राइट। तो आप बोल सकते हो कि ये कंप्लीट रिस्पॉन्स नहीं होता, ठीक है। कंप्लीट रिस्पॉन्स क्या होगा, और यू कैन से कंप्लीट टाइम रिस्पॉन्स जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। तो आपका एक्स आ जाता है यहाँ पर, एक्स कितना आ जाएगा, देखो एक्स आप जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो एक्स आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स आएगा, मल्टीप्लाई करवाओ कॉस रूट टू टी प्लस साइन रूट टू टी, राइट, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस रूट साइन रूट टू टी प्लस कॉस रूट टू टी, ये एक्स आ गया, ठीक है, आपका एक्स है। और इसमें ये क्या है, ये आप बोल सकते हो x1t, ये आपका है x2t, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड द कंप्लीट टाइम रिस्पॉन्स। देखो कंप्लीट टाइम रिस्पॉन्स किसको बोलते हैं, अब ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो आपका सोल्यूशन है, ये क्या है आपका, सॉरी आई थिंक आई हैव मेंशन्ड हियर कंप्लीट सिस्टम रिस्पॉन्स, यू शुड नो दैट दिस इज द सोल्यूशन, it is the solution of the system, okay, solution of the state model, ये solution होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है। प्लीज रिमेंबर गाइस, ठीक है, मैंने आई थिंक आई हैव मेंशन समवेयर आल्सो
है ना, याद रखना इसको। ये सोल्यूशन मैं बता रहा था आपको, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, प्लीज रिमेंबर, ठीक है। ओके, यू कैन करेक्ट इट, ओके प्लीज। 1 मिनट। ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है, दिस इज अ सोल्यूशन, राइट, नॉट द कंप्लीट रेस्पॉन्स। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। इसको आप करेक्ट कर लेना जहां पर मैंने थोड़ा सा करेक्शन किया है, बाकी सब सही है, राइट। तो यू हैव टू ऑब्टेन द कंप्लीट टाइम रिस्पॉन्स और कंप्लीट सिस्टम रिस्पॉन्स, वो आउटपुट होगा, कंप्लीट सिस्टम रिस्पॉन्स आउटपुट बाई ना, क्योंकि पूरे सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होगा, आउटपुट होगा ना, ठीक है। ये याद रखना, ये सोल्यूशन ऑफ द स्टेट मॉडल है, ओके प्लीज, और सोल्यूशन ऑफ द स्टेट इक्वेशन है, राइट। ये दिस इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द स्टेट इक्वेशन और मॉडल, यू कैन से, प्लीज रिमेंबर गाइस। एंड you have to recall the output equation, right? What is that output equation? ठीक है, the complete system time response, okay, is going to be equal to by of t, and by of t is nothing but what, आपका यहाँ पर वेक्टर दिया रहेगा by of t का, that is 1 1, एंड यहाँ पर आपको x1t और x2t यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है, x1t एंड x2t आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट, यू कैन कॉपी फ्रॉम हियर, राइट। ये आप याद रखना, थोड़ा सा यहाँ पर डाउट कंफ्यूजन हुआ था उस टाइम, राइट, मतलब मैं जस्ट आई स्पोक अबाउट दैट, बट प्लीज करेक्ट इट, राइट। यहाँ पर आप रख सकते हो डायरेक्टली ये, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन है, मैंने आपको हेडिंग से ही बताया था, दैट इज सोल्यूशन, राइट। अब आपको सिस्टम रिस्पॉन्स निकालना है तो बाई टी निकालना पड़ेगा। अब सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये क्या देगा, बस इसको ऐड कर देना है सारा का सारा। इफ यू मल्टीप्लाई ऐड एडिशन हो जाएगा, इफ यू ऐड एवरीथिंग, राइट। सो ये मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है। इसको आप ऐड करोगे, ठीक है, ऐड करने में क्या आने वाला है, यू सी, आई थिंक दिस वाज -1, राइट, दिस वाज -1, बाई इज गिवन एज 1 एंड -1, राइट। क्वेश्चन में आपको बाई भी दिया है, इसीलिए दिया है क्योंकि आपको कंप्लीट रिस्पॉन्स निकालना है, राइट। हाँ, ये -1 दिया, ठीक है। तो याद रखना, सोल्यूशन और सिस्टम रिस्पॉन्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, याद रखना हमेशा। सोल्यूशन आप फाइंड करोगे स्टेट इक्वेशन का, उसके बाद आपको सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई भी करवाना है, ठीक है, सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना, तभी आपको कंप्लीट रिस्पॉन्स मिलेगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाते हो, ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई दिस, यू विल गेट हियर एज cos √2t प्लस हो जाएगा √2 sin √2t एंड देन प्लस sin √2t माइनस cos √2t। ये कैंसिल हो रहा है यहाँ से, तो ये 1 प्लस दिस, जिसको आप ऐड कर सकते हो। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं एरर तो नहीं है। एक एरर और है, कहाँ पर एक एरर है, यहाँ पर, क्योंकि 1/s² + 2 था, तो यहाँ पर 1/√2 आपको लिखना पड़ेगा। तो ये भी एक एरर था, इसको भी आप करेक्ट कर सकते हो, 1/√2, मतलब कैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं वहां पर 1/√2, ठीक है, यहाँ पर भी 1/√2 ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको 1/√2 लिखना पड़ेगा, okay? अभी ऐड कर रहे हो तो ये भी 1/√2 है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये इट्स अ वेरी सिंपल सिचुएशन नाउ, राइट। सो विल गेट हियर 3/√2 sin √2t, ठीक है, ये आंसर आपका आएगा। Okay, so they might ask question like what is the value of y at t equal to 0 or something, whatever, right? They might ask you कि कुछ भी पूछ सकते हैं, right? They might ask you what is the value of this t equal at you can say that 2√2, okay, ऐसा पूछ लिया, ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका, ठीक है, ऐसा पूछ सकते हैं, ठीक है, at t equal to
क्या वैल्यू होगा आउटपुट का, कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट। तो कंप्लीट रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है गाइस, कंप्लीट रिस्पॉन्स मींस यू हैव टू फाइंड द आउटपुट, ओके, बट बिफोर दैट यू नीड टू नो द सॉल्यूशन ऑफ द स्टेट मॉडल, ठीक है। तो आपको स्टेट मॉडल सबसे पहले, मान लो क्वेश्चन में कंप्लीट रिस्पॉन्स पूछा है, ठीक है, कंप्लीट रिस्पॉन्स, कंप्लीट रिस्पॉन्स आपका क्या होगा, बाई टी इक्वल टू सी मैट्रिक्स एक्स। तो उसके पहले आपको निकालना क्या पड़ेगा, फर्स्ट फाइंड द solution of state model, okay, first find the solution of state model, please remember, ठीक है, स्टेट मॉडल आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका सोल्यूशन क्या होगा, ये सब देखते हैं, ठीक है। तो बस मैं आपको जल्दी से हिंट दूंगा, यू गाइस कैन ट्राई दैट क्वेश्चन, राइट। तो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ऑब्टेन द टाइम रिस्पॉन्स फॉर यूनिट स्टेप इनपुट। देखो, ऑब्टेन द टाइम रिस्पॉन्स, ऑब्टेन द टाइम रिस्पॉन्स फॉर यूनिट स्टेप इनपुट, unit step input, right? So already they have mentioned input here, right? They have mentioned input here, okay? तो इनपुट अगर मेंशन है मतलब आप क्या करोगे, समझ सकते हो, राइट, कि ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ, नॉन होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन है, नॉट सिस्टम, ओके, नॉन होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन। तो ऑब्टेन द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ यूनिट स्टेप, ओके, यूनिट स्टेप for unit step input for a system given below, for a system, they have given some system here in terms of state model given by x dot is given as 0 1 -2 -3, right, x1 and x2, okay, plus this time they have also mentioned here this, okay, B matrix is also given and U is also given, right। U लेकिन यहाँ पर क्या है, U आपका दिया हुआ यूनिट स्टेप, तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो 1/s होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको इनिशियल स्टेट भी दिया है, इनिशियल स्टेट आपका क्या दिया है 1 0, और आपका आउटपुट भी दिया है बाई, आउटपुट तो देगा ही, बस आपको ये निकालना है, दिस यू हैव टू फाइंड फ्रॉम द एक्स डॉट, फ्रॉम दी एक्स डॉट यू हैव टू फाइंड एक्स, मतलब क्या है, सोल्यूशन आपको फाइंड करना है इसका पहले, इसमें दोनों सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, जेड आई आर और जेड एस आर, यू विल गेट जेड आई आर एज वेल एज जेड एस आर, ठीक है, आपको जेड आई आर भी आएगा और जेड एस आर भी आने वाला है, इट्स अ वेरी कूल, you can say जेड आई आर एंड जेड एस आर बोथ you will get, right, so I hope this makes sense, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन नहीं बताने वाला हूँ, जस्ट यू डू बाय योरसेल्फ, राइट, बट आई विल गिव यू द स्टेप्स, राइट। सो आप समझो, यहाँ पर क्वेश्चन देखकर आप क्या समझ पा रहे हो, क्वेश्चन में ये दिया है कि इफ इनपुट इज गिवन, मतलब ये क्या है, इट इज अ नॉन होमोजीनियस, राइट, इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, राइट, सिंस इनपुट इज मेंशन नॉट जीरो, तो आपका जो xt होगा, याद रखना xt विल कंटेन जेड आई आर एज वेल एज जेड एस आर, और अगर स्टेट जीरो स्टेट रेस्पॉन्स, जीरो इनपुट रेस्पॉन्स, जीरो इनपुट रेस्पॉन्स, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जीरो इनपुट रेस्पॉन्स, जीरो स्टेट रेस्पॉन्स, राइट, ठीक है। तो जेड आई आर एंड जेड एस आर, फाइन, जेड आई आर एंड जेड एस आर, अब देखो जब दोनों दिया है तो इट इज जेड आई आर, जेड आई आर, जीरो इनपुट रेस्पॉन्स प्लस जेड एस आर, आपको ये टोटल सोल्यूशन रहेगा। लेकिन जीरो इनपुट रेस्पॉन्स कैसे फाइंड करते हैं, आपको इनपुट को जीरो करना पड़ेगा। जीरो स्टेट रेस्पॉन्स कैसे फाइंड करते हैं, आपको जीरो स्टेट रेस्पॉन्स
जीरो करना पड़ेगा, इनपुट के थ्रू आप फाइंड करोगे और लास्ट में क्या करोगे, ऐड कर दोगे, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम जेड आई आर निकालना चाहते हैं, मान लो जेड आई आर, तो जेड आई आर हमारा क्या होता है, जेड आई आर निकालने के लिए आपको स्टेट भूलना पड़ेगा, स्टेट इनिशियल स्टेट आपको भूलना है, राइट, ठीक है। मतलब सॉरी, स्टेट इनिशियल स्टेट तो आपको याद रखना पड़ेगा, इनपुट को जीरो करना पड़ेगा, आप समझ सकते हो, सॉरी, राइट। हियर x of 0, आप बिकॉज ऑफ x of 0 you will get ZIR, right? You can say that that is going to be, e raised to power 80 times phi t, sorry, not phi t, it will be x of 0, or you can say phi t x of 0, right, ठीक है। अब आपको phi t निकालना है, तो phi t निकालने के लिए क्या करते हैं, L इनवर्स SI माइनस A इनवर्स निकालना पड़ेगा। ओके, तो आपको मिल जाएगा, ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपको जो phi t आएगा, मतलब आप इनवर्स निकाल लोगे, सब कुछ कर लोगे, तो phi t आपका आने वाला है कुछ ऐसा, 2 e raised to power माइनस टी माइनस e raised to power माइनस 2t, राइट, e raised to power माइनस टी raised to power माइनस 2t, आपको ये सब आएगा। मतलब आप पहले उसका SI माइनस से निकालोगे, फिर इनवर्स लोगे, तब ये आएगा, है ना, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ठीक है, phi t आ जाएगा, phi t आ गया, phi t से आप ZIR निकाल सकते हो। तो आप दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करोगे, है ना, एक में इनपुट जीरो करना है, एक में स्टेट इनिशियल स्टेट को आपको भूल जाना है, राइट। जीरो नेम से समझ सकते हो, जीरो इनपुट रेस्पॉन्स, जीरो स्टेट रेस्पॉन्स, ठीक है। तो ZIR आपका आ जाएगा, ZIR आपका क्या आएगा, याद रखना, दैट इज phi t टाइम्स x ऑफ 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 e raised to power माइनस टी माइनस e raised to power माइनस 2t और माइनस 2 e raised to power माइनस टी प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा आपका ZIR। अब ZSR निकालने के लिए क्या करेंगे, व्हाट इज ZSR, L इनवर्स ऑफ फाई एस, L इनवर्स ऑफ फाई एस, राइट, फाई एस टाइम्स P टाइम्स US। तो आपको फाई एस तो ऑलरेडी यू हैव गॉट फाई एस, कहाँ पर फाई एस आपको मिलेगा, जब आप SI माइनस ए निकालोगे, SI माइनस ए इनवर्स इज द फाई एस ओनली, राइट। तो बार बार आपको निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपके पास SI माइनस ए ऑलरेडी पता है, SI माइनस ए होल इनवर्स इज द फाई एस। आपको याद रखना है ये L इनवर्स यहाँ पर क्या है, इट इज नथिंग बट SI माइनस ए होल इनवर्स B टाइम्स US। US आपका 1/s है, याद रखना, ठीक है, 1/s इज द US and US here is the matrix only, right, please remember, ठीक है। So B matrix रहेगा, sorry not, it is simply input not matrix, B is the matrix, okay। तो U of S is basically 1/s, ठीक है, और यहाँ पर B मैट्रिक्स आपका कुछ ऐसा है, राइट। तो आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा ZSR। ZSR वंस यू गॉट ZSR, राइट, उसका L इनवर्स निकाल के, तो आपको टोटल आएगा XT, राइट। जैसे XT आ जाता है, XT इज नथिंग बट ZIR प्लस ZSR, तो आप सीधा सीधा आउटपुट निकाल सकते हो, बाई T इज गोइंग टू बी C मैट्रिक्स टाइम्स, यहाँ पर आप लिख दो X1T X2T, मतलब आपको जो भी यहाँ से मिलेगा, राइट, तो आपका आउटपुट आ जाएगा। और फिर आउटपुट किसी टाइम इंस्टेंट में पूछता है, अगर इफ दे आर आस्किंग आउटपुट एट सम टाइम इंस्टेंट, तो यू कैन क्विकली फाइंड आउट। सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस दैट यू कैन फॉलो इट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो इस सेशन से आपको क्या क्या याद रखना है, व्हाट टू कीप इन माइंड फॉर योर एग्जाम। इस सेशन से क्या क्या याद रखना है, पहला, ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं, CSI माइनस A होल इनवर्स टाइम्स B, ओके, प्लस D, ये पहला। सेकंड वन इज स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ये क्या होता है, विच इज L इनवर्स ऑफ SI माइनस A होल इनवर्स। और आपको
थर्ड फाइव एस भी याद रखना है। फाइव एस इज नथिंग बट एस आई माइनस ए होल इनवर्स। इनकी प्रॉपर्टी याद रखना है, जो भी प्रॉपर्टीज आपको पता है। समटाइम्स आप डायरेक्टली वेरीफाई भी कर सकते हैं, आपको निकालना नहीं पड़ेगा। टाइम में मेनली गेट एग्जाम में यू हैव टू वेरीफाई विद द प्रॉपर्टी, अगर सिंपल स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स पूछा है तो, ठीक है। और उसके बाद आपको सोल्यूशन याद रखना है, सोल्यूशन ऑफ द स्टेट मॉडल, राइट, दैट इज एक्सटी। एक्सटी इज नथिंग बट अ सोल्यूशन विच इज जेड आई आर प्लस जेड एस आर। ये दोनों को इंडिपेंडेंटली आपको निकालना है, राइट, ठीक है। तो आप जेड आई आर जेड एस आर, ठीक है। अगर मान लो इनपुट 0 है तो जेड एस आर नहीं होगा, है ना। जेड एस आर आपको फाइंड ही नहीं करना है, केवल जेड आई आर फाइंड करना है सोल्यूशन में। अगर मान लो इनपुट दिया है, स्टेट मॉडल दिया है, राइट, तो आपको स्टेट इनिशियल स्टेट भी दिया है, तो आपको दोनों फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में आपको याद रखना है, इट इज नथिंग बट ई रेज्ड पावर 80 फाइव टी, सॉरी नॉट फाइव टी, स्टेट इनिशियल स्टेट एक्स ऑफ 0 प्लस एल इनवर्स ऑफ फाइव एस साइंस बी साइंस यू ऑफ एस। बस इनपुट आपको दिया मेंशन रहेगा, ये निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। बस यही सारी चीजें हैं जो आपको फोकस करना है। और उसके बाद आपको आउटपुट कैसे निकालते हैं, सिंस यू वंस यू गेट दिस सोल्यूशन, राइट, तो पांचवा आपको याद रखना है सिस्टम रिस्पॉन्स। सिस्टम रिस्पॉन्स आपका क्या होगा, सिस्टम रिस्पॉन्स बाई इक्वल टू सी मैट्रिक्स टाइम्स एक्स। एक्स इज अ मैट्रिक्स ओनली, राइट। तो जैसे ही आपको सी मैट्रिक्स भी दिया रहेगा और आप एक्स टी फाइंड कर लेते हो तो मल्टीप्लाई करना है, आउटपुट आ जाएगा, बस, ठीक है। So I think this is enough for today, right? एक और कंप्लीट कर, एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करना है अब। एक पहला कॉन्सेप्ट आपके पास है कंट्रोलेबिलिटी, और दूसरा है ऑब्जर्वेबिलिटी। ऑब्जर्वेबिलिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें अभी डिस्कस करने हैं, ठीक है। और भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम स्टेट एरर फाइंड करते हैं। ओके, स्टेडी स्टेट एरर कैसे फाइंड करेंगे अगर स्टेट मॉडल गिवन है तो। और ये पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो